Okay, so once okay, my screen is visible. Thank you. So, good evening, everyone. Welcome back to my channel. In today's session, I'm going to discuss user datagram protocol. I'm not going to discuss protocol, how this protocol works, or how this protocol is used in networking in Java. So that I'm going to take. So I hope you all know user datagram packet. The session which we have conducted previously, they were based on what? They were based on TCP. Okay. So what is the benefit of using TCP? It is what? Reliable. Okay. And it gives what? One-to-one communication. So whenever someone is sending the data, you are definitely going to receive the data. That is possible in case of what? TCP. So UDP is also a communication protocol used for communication purpose. But the problem with UDP, actually not a problem. The working of UDP is what? It is not one-to-one communication. So like unless server starts or client connects, it's not like that. Server is started, any client who want to connect, they can connect, like that it works. So here you can see in this diagram, I'm having server, and then I'm having what? Client, and the server is sending up data to a client, and client sending data to a server. That happens in UDP also. But now this data are called as what? This data are called as packets. Whenever you want to communicate using UDP, you have to send data in the form of packets. So for example, I want to send hello client. So hello client becomes what? My packets. Okay. So what information in my packet I will be having? I will be having my actual data. What is the length of data? Where to send my data? And what is the port number where we have to send data? Okay, so UDP is nothing but user datagram protocol, again a standard which is used for communication purpose. So if we are having TCP and that is a reliable, why we should go for UDP? Okay, so UDP is quite popular, or not popular, UDP is quite different, मोर कॉमन टीसीपी. तो जो आप टीसीपी यूज करते हो उससे यूडीपी बहुत ही डिफरेंट है. So, what is the difference between the UDP and TCP? The main advantage is what? Its speed. So, UDP is faster as compared to TCP. Why? Because you don't have overhead of handling reliability or one-to-one communication. जब आप वन टू वन कम्युनिकेशन करते हो तब आपको वहां पे रिलायबिलिटी इंश्योर करनी पड़ती है. ठीक है. बट यूडीपी में ऐसे नहीं है. डेटा सेंड कर दिया, डेटा आपको रिसीव हुआ, एरर आया, क्या हुआ, वो उसका लेना देना नहीं है. जबकि ये सब टीसीपी में हैंडल होता था. टीसीपी का उसका खुद का ही स्टैंडर्ड है और मैकेनिज्म है, वो सब हैंडल करता है. सो बिकॉज ऑफ दैट लेस ओवरहेड, वी आर हैविंग व्हाट? स्पीड मच मोर faster as compared to TCP. So UDP is significantly faster than a TCP because it lacks of what? Overhead. Okay, what is the overhead over here? कौन सा ओवरहेड है हमारे पास? यूडीपी में कौन सा ओवरहेड नहीं है? वन टू वन कम्युनिकेशन का ओवरहेड नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है? फास्टर है. ओके, बट प्रॉब्लम क्या है यूडीपी के साथ? यूडीपी क्या करता है? गारंटी नहीं करता है that your message is going to be delivered. Okay, it does not guarantee that part. So that is what a disadvantage that is related to UDP. So it is attractive because of its speed, but the disadvantage or having is that delivery, no guarantee or no dedicated point to point channel. One to one communication is not there in UDP, unlike your TCP. So UDP does not have a acknowledgement omission failure. मतलब अगर रिसीव नहीं हुआ, कुछ फेल हो गया, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया नेटवर्क का और एरर आ गए, उसका कुछ लेना देना नहीं है. आपके पैकेट्स ड्रॉप हो गए, उसका कुछ लेना देना नहीं है.
So messages can be sometime be delivered out of sender order. So we have seen in TCP that whatever data you are sending using a TCP protocol, in that case, what happens? The data are sent in the order which you send the data. So if you have sent your data of hello, then hi, then how are you, it receives to the receiver. But it's not like in what UDP order कभी कभी change भी हो जाता है. ठीक है, तो यही advantage and disadvantage है. Advantage is what UDP is faster as compared to TCP, and another disadvantage is what one to one, or there is no guarantee of what receiving the data. Student, please ask your other friends to join so that they can also get benefit of this session. Again, this session is going to be powerful like the previous session, and you will, after attend the session, you will be thanking me that आपने कुछ तो learn किया है आज के session से. So I want that everyone should get benefited of this session. Okay, so now नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है मैंने VoIP का. आई होप यू ऑल नो VoIP, वॉइस ओवर. पता है आप सबको? टाइप यस और नो इफ यू नो VoIP. डज एनीबडी नो VoIP? वॉइस ओवर IP. सो वॉट एवर कॉलिंग, ये जो आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो और डुओ कॉलिंग करते हो, वॉइस कॉलिंग जो होते हैं और वॉइस मैसेजेस जो होते हैं, वो क्या uses what? Your UDP. Okay, so VoIP is one of the famous example which uses what? UDP. Then now you have shown in diagram how this UDP works, how client server. Okay, so VoIP आपका voice, आप आजकल तो अगर आपके मोबाइल में वाईफाई है या इंटरनेट है, आप नॉर्मल कॉलिंग करने के बजाय आप वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हो. व्हाट्सएप कॉलिंग, डुओ, एंड देन फेसबुक के थ्रू भी आप कॉलिंग कर सकते हो, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू. सो दे आर नोन एज व्हाट? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. They uses what? UDP. So that is one of the great example we have for UDP. Then student, you can see what I have shown in this diagram. Here is my and here is my client. ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर है. अब सर्वर ने सॉकेट बनाया है. अब तो आप सबको पता है सॉकेट का यूजेस क्या है. तो सॉकेट बनाया और क्लाइंट के पास भी सॉकेट है. दे बोथ शुड हैव सॉकेट, बिकॉज नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है. देन व्हाट client is sending request using datagram. So here whatever request response is done, sending and receiving of data is done, they are done through what? Datagram packets. So client sends what? Request using datagram. So that request comes to server reads the request. What the server sends the reply. For example, in my previous session we have done checking whether number is positive or not, or any other calculation will be done by the server, and reply of that will be sent to a client, and client क्या करेगा? Reply read करके close कर देगा, and server again restart होगा, so that if other clients connects, the server can reply to request of other clients also. Is this diagram clear to you all student? Yes, ये diagram सबको समझ गया है? Okay, basic diagram है, not so difficult. Okay, fine. So now we'll be going ahead. Socket programming works. They works on two main classes, that is datagram packet. Number one is datagram packet. Number two is datagrams. Like TCP uses what? TCP uses server socket and socket. Similarly, UDP uses what? Datagram packet and socket. I hope you all remember server socket and socket. So just type answer of this question. Socket, server socket is used at client side or at server side? Okay, so UDP socket programming communication is done in datagram packet and datagram socket. ठीक है, ये दो क्लासेस हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं. देन वी हैव टू मेथड्स. दीज मेथड्स, सॉरी, कैपिटल में हो गया RNS, दे आर मेथड्स, सो इट शुड बी इन स्मॉल. So receive and send are the two very important method
for sending a packet and for receiving a packet. Yes, so the important classes are datagram packet and datagram socket. Yes, you all are right. server socket server के यहाँ पे use होता है. So अब मैं क्या करती हूँ, I'm going to tell you what is functionality of this datagram packet and what is functionality of datagram socket. Student, just pay attention for 15 minutes. आपको ये basic समझ जाएगा ना, then you will be you can easily understand programming. Like yesterday, how you all have understood how to do TCP or chat application आपने पूरा कर लिया कल के session में. So similarly, today's session also you will understand. So now datagram has two important method. One is receive, another is send. तो receive क्या करता है? डेटा रिसीव करता है, रीड करता है, एंड सेंड क्या करता है? डेटा सेंड करता है. जैसे कल के सेशन में हमने क्या किया? we did what input stream and output stream. So input stream for reading the data and output stream is used for what? Writing a data. So now here we are not using stream, input stream and output. We are basically going to use send and receive methods. So जो भी टास्क है ना, ये पैकेट्स के थ्रू होता है, सेंड और रिसीव, और उस रोल प्ले करता है. So now let's understand what I have given in this slide. So UDP, in UDP terms, data transferred is encapsulated in a unit called what? Datagram. तो अगर आपका एक डेटा है, हेलो, हाय, वेलकम, हाउ आर यू, मीट मी एट दिस टाइम, व्हाटएवर मैसेज यू आर हैविंग, दे आर व्हाट? दे आर कॉल्ड एज डेटाग्राम. ओके, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? डेटा. जो भी आपको ट्रांसफर करना है उसको क्या बोलते हैं? डेटाग्राम. And datagram is what? An independent self-contained message sent over the network whose arrival time and content are not guaranteed. तो ये तो हमने पहले ही देखा कि यूडीपी में कुछ गारंटी नहीं होती है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि लॉस्ट हो जाएगा. तो डेटाग्राम इज नथिंग बट अ मैसेज which are sent over a network, but there is no guarantee that this message is going to be received or not. Okay, so in Java, what is this datagram? ये तो मतलब अगर आप नेटवर्किंग का फंडा लोगे, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का फंडा लोगे, तो उसमें डेटाग्राम क्या होता है? आपका मैसेज. जावा में उस डेटा क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज डेटाग्राम पैकेट. So datagram packets are nothing but datagram. And what are datagram? Datagrams are nothing but message sent over a network. Yes, is it clear to you all? Datagram packet. So they are nothing but the message which you want to send or receive. Type clear if datagram packet term is clear to you all. Okay. Now then I have shown datagram packet. So we have overloaded constructors, around 4 constructors hai, but I have shown only this 2 constructor that are commonly used. So one constructor is what? Which is taking byte data, and second parameter is what? Length. So communication of data is done in byte format. तो आपका जो मैसेज है ना, वो आपको बाइट फॉर्मेट में सेंड करना पड़ेगा. If you are sending hello, good evening, then वो good evening hello को आपको बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. And length is what? Length of your data. Okay, then next constructor which we are having is what? Taking 4 parameter. This is what the important one which I am going to use, which is taking 4 parameter. Parameter number 1 is what? Your data in byte format. String integer नहीं send कर सकते हो आप. जो आपका जो भी डेटा है उसको बाइट में कन्वर्ट कर दो. ओके, देन फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट? योर बाइट डेटा. सेकंड पैरामीटर इज योर लेंथ ऑफ योर डेटा. थर्ड पैरामीटर इज व्हाट? एड्रेस. ओके, तो हम लोग ने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस सेशन में यू ऑल हैव सीन, कहीं आपको अगर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स करना है तो कहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स करना है वो तो बताना पड़ेगा. So if you all remember last lecture we have seen localhost as well as 127.0.0 हमने देखा था. तो वैसे ही यहाँ पे भी है. INET एड्रेस क्या होता है?
आपको जिसके साथ कम्युनिकेट करना है, बट हियर यू कांट पास दैट इन a strict format InetAddress, which is a class. I will be explaining that after this datagram packet and socket. So just wait, just that this is what nothing but address where you want to send your data. So if you want to send data to a server, so it is going to be a address of server. If you are sending data to a client, then it is going to be a address of a client. Finally, fourth parameter is going to be a port number, that we all services runs on a particular port number, and on one port number only one services run. So on which port number you want to connect, that to pass. Okay, so student, I hope the constructors are clear to you all. Now I'm moving to next funda or next concept is datagram socket. Okay, so datagram sockets, they are nothing but what? We use it to send and receive packets. तो जब आपको पैकेट सेंड करना है और रिसीव करना है, तो आप क्या यूज करोगे? डेटाग्राम सॉकेट्स. यूजिंग डेटाग्राम पैकेट यू कैन मेक योर पैकेट्स रेडी, मतलब आप अपने मैसेजेस को रेडी कर दोगे सेंड करने के लिए. बट एक्चुअली हु इज गोइंग टू सेंड द पैकेट? डेटाग्राम सॉकेट. So the method which we have seen just now, send and receive, that belongs to what? Datagram socket. So datagram socket is having method receive. In that method, you are going to pass what? Packets. क्या packet, क्या message आपको send करना है. So datagram socket is a UDP connection between two computers in a network. तो socket के through क्या होता है? Connection establish होता है. Then in Java, we use a datagram socket for both client and server. Now here is something different which we have done in before yesterday session. In TCP socket, we have seen whenever you want to create server program, you create object of what? Server. And whenever you want to create client program, you create object of socket. But here in datagram or in UDP, what we have to create socket at both the places. Okay, so at server side आपको बताना पड़ेगा कि कौन से पोर्ट पे रन हो रहे हो, और क्लाइंट पे भी डेटाग्राम सॉकेट ही बनाना पड़ेगा, और वहां पे आप बताओगे कि आपको किसके साथ कनेक्ट करना है. The concept remains same, like in TCP socket also you did what? At server side you made your server ready with a particular port number, and client used socket to connect with that port number and address. Same we are doing over here, but now we are not having two different classes like server socket and socket. We have common class known as datagram socket. Yes student, is this clear? What is purpose of datagram socket? ठीक है, so no separate class we are having for server and client. योर टीसीपी, जहां पे सर्वर के लिए अलग था और क्लाइंट के लिए अलग है. सो नाउ यू कैन सी द कंस्ट्रक्टर विच आई एम हैविंग. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है जिसको मैंने पोर्ट नंबर दे दिया है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है जिसपे मैंने पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस असाइन किया. आप इसमें से कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो. ओके, सो डेटाग्राम सॉकेट्स मेथड्स. Just now I told you we have a method, that send and receive method. So send method क्या करेगा? Packet send करेगा. तो आपको क्या pass करना है? Can you see student what parameter it is taking? It is taking datagram packet. और receive method भी क्या करता है? Datagram packet ही लेता है. तो आप packets ready कर लो, but send करने के लिए आपको किसकी help लगेगी? Datagram sockets की लगेगी. फाइनली कम्युनिकेशन हो जाएगा. तो आपको क्या करना है? आपको करना है. ओके, इज इट क्लियर? यस. सो स्टूडेंट प्लीज टाइप इफ this is clear to you all, datagram packet and datagram socket. Then I'll go to the further part of the session. सबको समझ में आ गया है? ओके, so now I'm moving ahead. Okay, now this is what all datagram packet is going to have, this kind of format. What is the format?
each message transferred from source machine to destination machines based on information contained within the packet. ओके, तो क्या इंफॉर्मेशन होता है? मैसेज होता है, लेंथ होता है, होस्ट होता है, पोर्ट होता है. ओके, लेट मी गिव वन एग्जांपल. सपोज आपके घर पे आज कुरियर आया, तो what that courier person should know about that courier, that he or she should know address, और वो क्या कुरियर है, और उसका लाइक आप कुरियर करने जाते हो तो वेट भी लगता है, वेइंग मशीन पे आप वेट करते हो, अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करना पड़ता है. सेम थिंग हियर, मैसेजेस आपको सेंड करना है तो आपके पास ओरिजिनल मैसेज होना चाहिए, मैसेज का लेंथ होना चाहिए, और कहाँ पे सेंड कर, दैट इज अ होस्ट और वी कैन से डेस्टिनेशन जहां पे सेंड हो रहा है, एंड अनदर थिंग इज व्हाट, पोर्ट नंबर. ये 4 चीज होनी चाहिए. आपने बिल्डिंग एड्रेस बता दिया, होस्ट बता दिया, बट रूम नंबर नहीं बताया तो वो किसको डिलीवर करेगा? सो पोर्ट नंबर भी आपको बताना है. इज इट ओके? ये डायग्राम आपको समझ गया? बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये. नाउ नेक्स्ट आई हैव शोन व्हाट स्टेप्स फॉर व्हाट कम्युनिकेशन स्टेप्स एट सर्वर साइड. सो फटाफट थ्योरी करते हैं सो दैट आई कैन जंप टू एग्जांपल्स. यू विल एंजॉय लर्निंग एग्जांपल. तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है? सर्वर साइड पे यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सॉकेट, एंड देन इफ एनी पैकेट हैज कम, आपको क्या करना है? रिसीव करना है. अगर आपको पैकेट सेंड्स करना है, ओके, इफ यू वांट टू सेंड द पैकेट्स, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू use method and the packet and the host and the port to whom you want to send packet, that you need to write in send method. बट रिसीव में तो रिसीवर ने ऑलरेडी, सेंडर ने ऑलरेडी बता दिया है ना इसके पास पैकेट जाना चाहिए. सो देयरफॉर इन रिसीव वी डोंट पास होस्ट एंड पोर्ट, बट इन सेंड वी पास होस्ट एंड पोर्ट. ओके, लाइक आप कुरियर करते हो तो कुरियर में आपको एड्रेस तो लिखना पड़ता है ना, बट जो आपका कुरियर रिसीव करता है उसको बताना पड़ता है, हाँ मुझे रिसीव हुआ है, मेरा पोर्ट नंबर है. नो. सो रिमेंबर इन दिस वे, सो ऑलवेज send method you have to tell host and port, and in receive method you don't have to tell host and port. तो ये था किसका? सर्वर का स्टेप्स. अब क्लाइंट के स्टेप्स देखते हैं. लाइक आई सेड you have to create places, so I have created socket at my server side. I am creating socket at client side also. दोनों जगह सॉकेट बना दिया है. यहाँ पे सॉकेट में सकते हैं. देन उसके बाद क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है. तो जस्ट नाउ आई सेड सेंडिंग, वेरेवर यू आर डूइंग सेंडिंग पैकेट आपको तो देना ही पड़ेगा, और रिसीव किया तो आप सिर्फ पैकेट रिसीव करो, एंड फाइनली क्लोज द कनेक्शन. ये स्टूडेंट, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड डाटाग्राम सॉकेट and datagram packet funda? So just now I said that we are going to use one thing known as InetAddress. InetAddress क्या होता है? इसके पहले we have passed local host and IP address in TCP. So TCP accepts string parameter. उसको चलता है, वो strict format चाहिए, that is InetAddress. So let me explain this InetAddress. So what is InetAddress? InetAddress is nothing but what? Java representation of IP address. आपने लिखा 192.60.53.21, but Java will come to know that this is a IP address, not a normal string. So for that we have what? InetAddress class. Instances of class are used together with UDP datagram socket and normal sockets and server socket. तो ये InetAddress आप normal server पे भी कर सकते हो, बट मैंने आपको basic string के साथ बताया है. Okay, so now how to create object of InetAddress. So here you can't directly write InetAddress IA equal to new InetAddress. आपको क्या करना पड़ेगा? उसके स्टार्टिंग मेथड के थ्रू यूज करना पड़ेगा. So the first method we have as get by name. So you pass any domain name, what it is going to return you? It is going to return you IP address of that domain. So if I'm passing google.com here, I'm going to get what? IP address of google.com, and the IP address is not a normal data that will be stored in
InetAddress data type, okay, or a class. Then अगर मैं यहाँ पे GN Khalsa डालती हूँ, so I'm going to get what? IP address of gnkhalsa.edu.in. Yes, student, is this clear to you all? Get by name IP address when you pass domain name. DNS नेम आप पास करते हो तो वो उसका करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस देता है. डू यू रिमेम्बर आईपी एड्रेस ऑफ google.com, फेसबुक, ये सारे का आपको आईपी एड्रेस पता है क्या? नहीं, वी रिमेम्बर व्हाट? अ डोमेन नेम ओनली. डोमेन हमको पता है. सो देन नेक्स्ट मेथड इज व्हाट? आप आईपी एड्रेस पास कर दो और वो आपको क्या देगा? उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे देगा. So if you are passing IP addresses, then you are going to get what? String representation of that IP address. Then this is what? You can get IP address of your local machine also by using get localhost method. Okay, so get localhost returns address of local machine. So I'm going to use get localhost because I'm not connected with LAN. So that was all the theory related to this UDP. Okay, तो अब हम लोग क्या करते हैं? फटाफट एग्जाम्पल पे जंप करते हैं. विल सी द एग्जाम्पल. स्टूडेंट प्लीज टाइप क्लियर इफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाग्राम पैकेट एंड डेटाग्राम सॉकेट इज क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, तो लेट्स मूव टू एग्जाम्पल. सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज नेटबीन्स. नेटबीन्स में ही मैं प्रोग्राम करूंगी आज भी. आपको चाहिए तो I'll show you using notepad also. So let me quickly create one project. Okay, so what about others? Yes, yes, clear. Thank you, student. Okay, so open NetBeans and I'm creating new Java application. I'm making Java application, not making GUI based application. बहुत time लग जाएगा तो simple Java application के आ रही हूँ. So server UDP. Just I have given project name as server UDP. Okay, student, please share the link to your friend and ask them to join the session. I'm going to start with practical demonstration of how UDP and datagram packet and datagram sockets actually used and how they work. So I'm deleting this part so that आपको सिर्फ जो चाहिए वही screen पे दिखे. So let me delete all these comments. Okay, then again I'm making one project. That was server, na? Yes. UDP. So this is going to be client UDP. You can give any name. Okay, so let me increase font. Student, please confirm whether this font is okay or not, or should I have, do I have to increase little more? Okay, okay. Now it's okay. Let me know whether now the font is okay or not. Fine. Okay, so I created a UDP. एक मैंने client UDP बना दिया और एक server UDP. दो प्रोग्राम बना दिए हैं. So let me go to source pack of server UDP. So these are my two programs. So student, let's begin. So first of all, what I said, I told you to create a datagram socket. तो datagram socket बनाते हैं यहाँ पे. Okay, so you can see package has been imported because I'm using netbeans. कंट्रोल एंटर करते हैं, कंट्रोल स्पेस देते हैं तो पैकेज इंपोर्ट हो जाता है. देन ओके,
So what I'm going to pass over here, I'm going to pass port number. So let me pass port number 3456, any port number you can pass. So it is showing me error because we all know whatever networking part code you are writing, you need to write that in try catch block. So either you write in try catch block or you can throw the exception also. So this throws what? Socket exception. When you get socket exception, when the port is already in use, then you get what? Socket exception. तो अब मैंने यहाँ पे ये बना लिया. Okay. So datagram socket मैंने server पे बना लिया. Now I'll go to my client and there also I'll write what? I'll write lines for doing my datagram, creating datagram sockets. And let me print a simple message also. S out कर देने दो. Server started, so that we get some kind of feedback that server has started. Okay. Next. Next, I will be going to my client side. Student, I'm showing you steps simultaneously. It's not like that मैं पहले पूरा server लिख दूं फिर पूरा client लिख दूं, आपको कुछ नहीं समझेगा. So socket we have created, you all से ही आपका connection establish होता है. Okay. So socket, after creating socket at server side, I'm going to go to clients, and then here also I'm going to create what? Datagram socket. So ds equal new datagram socket. Here I'm giving what? Blank. I'm using blank constructor of datagram socket. Now again it asks you to throw exception. So let me throw exceptions. ठीक है, ये exception throw कर दिया आपने. Now then what I'm going to do? I'm going to print s out. Okay, so client started. Then after that, what I'm going to do, I'm going to create a packet for sending my data. So how to do that? Show you. So student, आपको क्या करना है? Message send करना है. So first of all, I'm going to create a message. String msg is equal to I am client. Okay, this is what my message. ये message मुझे कहाँ पे send करना है? But just now we have done theory that whatever message you are sending, they will be sent in which format? In a byte format. So as you all know, convert string into bytes by using what? Get bytes method. So now my message has been converted into bytes format. So now we'll be creating what? Datagram packet. So datagram packet मैसेज आपके पास रेडी है. अब आप क्या करो? कुरियर आपको करना है तो आपको पैकेट बनाना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा विद द इंफॉर्मेशन. मैसेज क्या है आपका, डेटा क्या है आपका, लेंथ क्या है, किसको सेंड करना है, वो सबके साथ आपको पैकेट्स रेडी करना पड़ेगा. सो डेटाग्राम पैकेट. And now what parameter I'm going to pass? 4 parameter. कौन सा? Byte data, length और उसके बाद inet address and then port number. So I'm using this. So मेरा डेटा क्या है? मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है? B के अंदर. तो मैंने B डाल दिया. Now don't calculate your manually. B is an array, so you can write B dot length. Now next we have to pass what? Fourth parameter, you have to pass what? INET address. So INET address आपको पास करना है. मैंने INET address का अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो उस अब मैं क्या करती हूँ? एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ. सो INET address, java.net का INET address यूज कर रहे हैं. We have INET address in NIC also. So INET is equal to, you can't write new INET address. You have to use static method. So get by name INET address. You can use get by name or you can use get local host. कोई भी आप यूज कर सकते हो. तो मैंने क्या किया है? Get by name यूज कर रही हूँ. तो मैं लोकल होस्ट पास कर दूंगी तो मेरे लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस आ जाएगा. Then I'm going to pass this INET address over here.
Okay, so last is what? Port number. Can you all tell me what port number I should pass over here? ये स्टूडेंट कैन पोर्ट नंबर क्या डालना है मुझे यहाँ पे? यस, where is my server? My server is running on which port number? It is running on port number 3456. So I want to send data to this server, so I have to pass what? 3456. और IP address तो मैंने already बता दिया है, तो 3456. Yes, very good, 3456. Now, yes, everything is ready. It is showing me error because ये InetAddress throws exception. So I need to throw what? Exception. Unknown host exception. Why it throws unknown host exception? मैंने इधर local host की spelling wrong कर दी, तो उसको तो वो मिलेगा ही नहीं ना. या आपने जो भी DNS name, domain name wrong डाला है, वो उसको मिलेगा ही नहीं. Therefore, it throws a exception. You can put this entire code in try catch block, or you can throw the exception. Okay, so अब आपको बताती हूँ, मैंने सॉकेट बना लिया, देन मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, मैंने मैसेज रेडी कर दिया कि मैं ये सेंड करने वाली हूँ. आई कन्वर्ट दैट इनटू बाइट्स, आई गॉट आईपी एड्रेस, और उसके बाद मैंने पैकेट. अब आपका कुरियर रेडी है, बस आपको कुरियर डिस्पैच करना है. सो सेंड करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? सॉकेट का कौन सा मेथड? Send method. And what we are going to pass in that? We are going to pass what? Okay, again it throws exception, so you need to throw what? Exception. So student, you can see socket exception kahan se aata hai? Datagram socket se. Unknown host exception we get from inet address. IO exception we get from send method. Is it okay to you all? Okay, so we have send the data. अब डेटा तो सेंड कर दिया हमने, अब वहां पे कोई रिसीव भी तो करना चाहिए ना. यस, so can we go to server part? Packet send. Okay, packet send. Server को मैंने packet send कर दिया. So now go to server part and let's receive the packet. Yes student, are you all understanding the concept? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है. Okay, so now I'm going to server side and I'm going to receive the packet. ओके, तो अब पैकेट रिसीव करने के लिए सर्वर के साइड पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा पैकेट बनाना पड़ेगा. ओके, सॉकेट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. नाउ वी हैव टू क्रिएट व्हाट? ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाग्राम पैकेट. सो व्हाट एवर डेटा इज कमिंग इज यू नीड टू रिसीव इट समवेयर और सम वेरिएबल. तो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वो वेरिएबल का टाइप क्या होगा? कैन एनी what type of variable I should create over here for receiving my packet? Meanwhile, I am creating variable of datagram packet. तब तक आप लोग टाइप करो मुझे डेटा रिसीव करने के लिए what kind of variable I should create over here. Yes, what type of variable we should create over here? Yes, we should create what? Byte variable. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बाइट वेरिएबल बनाना पड़ेगा. सो लेट्स क्रिएट बाइट वेरिएबल. सो आई डोंट नो लेंथ ऑफ पैकेट, सो आई एम क्रिएटिंग बाइट वेरिएबल विथ अ मैक्सिमम साइज. तो मैं 1000 का बाइट वेरिएबल 1000 साइज का बना दे रही हूँ. एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट पैकेट. सो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पैकेट आ रहा है, तो पैकेट को आपको रिसीव करना पड़ेगा. तो आप कहाँ पे इसको बताओगे कि आपका पैकेट किस में रिसीव होगा एंड व्हाट द लेंथ ऑफ द पैकेट. ओके, सो दैट यू हैव टू स्पेसिफाई ओवर हियर. एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू राइट ds डॉट रिसीव. जो पैकेट आएगा वो कहाँ पे रिसीव होगा? डीपी के अंदर. ओके, सो वी हैव रिसीव द पैकेट इन डीपी. So now this, but datagram packet, it is not your normal data type. So I need to convert that into my normal data type.
to create one variable of type string. So string str मैंने एक variable बना दिया equal to new string, and then in that convert my packet into my, or I'm going to retrieve the data which has been received. So get data करके method है. तो ये क्या आपका जो डेटा आया था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. सो आफ्टर इट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, आई कैन प्रिंट दैट read, and then I can print that variable. Yes. Okay, so I hope you all understood this code. Student, go through once again. Server है, server के ऊपर मैंने socket बनाया. So if it is a server, you need to specify port number. Client, in socket you don't have to specify port number because server runs services, client request for that services. Then client is sending data. यहाँ पे client अभी मैंने पहले send किया है, vice versa भी करेंगे. Then client has sent the data to the server. So server is going to receive the data. So how server will receive data? It is going to create one byte array, and then in that packet it is going to receive data by using receive method. So I'm running this program. सर्वर को मैंने रन कर दिया. अब क्या करते हैं, सर्वर स्टार्टेड मैसेज मुझे आ गया. ओके, लेट मी रन क्लाइंट ऑल्सो. सो क्लाइंट स्टार्टेड एंड पैकेट सेंड. तो भाई पैकेट सेंड हुआ तो रिसीव भी हो गया. रिसीव्ड, हे आई एम क्लाइंट, message which I sent from client side. Okay, so this is my client, and client has sent what message? Hey, I'm client. So this message has come at the server has received the packet, and what it is doing? It is printing the message. Yes, have to create string object because Hartej, this data which is coming, they are what? Datagram packets. We can't print datagram. Let me show you. If I print datagram packet, then what will happen? Okay, I'm trying to print DP over here. So if I try to print DP, आपको output क्या आएगा? आप देखो. So can you see this output? इट इज वॉट java.net डेटाग्राम पैकेट, और वो पैकेट का जो भी एक यूनिक एड्रेस है वो बता रहा है. बट आई डोंट वांट टू प्रिंट सच काइंड ऑफ मैसेज टू यूजर. यूजर को क्या समझेगा भाई ये क्या मैसेज है. सो आई वांट टू कन्वर्ट इन एग्जैक्ट फॉर्मेट, द फॉर्मेट विच यूजर हैज सेंट. So therefore I am trying to convert that packet into the string format. ठीक है, फॉर्मेट के लिए हम dp.getData करेंगे. dp.getData, if you remember this diagram, the diagram which I had shown you over here, in this diagram we have so many information in packet, but I'm interested only in this message. So this dp.getData is going to convert that. It is to retrieve only the message, and then that message I'm converting into string format and I'm printing. Yes, is this fine? Others also please reply. Did you all able to understand this concept? Okay, ठीक है. So can we do two-way communication? So here now server will send data to client and client will receive. One way is done. Data to a server and server has printed. Now let's complete two-way communication. Shall I? Okay. So now this was what? ये क्या था? ये receiving का part था, है ना? So this what received code. Now we will be doing send code. So can you all help me? Send code कैसे करेंगे? आपको कुछ send करना है तो सबसे पहले message बना दो. So I'm creating string msg. Okay. So let me store some message. Hey I'm server. ठीक है, ये मेरा मैसेज है. सिंपल मैसेज ले रही हूँ.
ये मैसेज बन गया। अब डेटा सेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैसेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट में। ऑफ कोर्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइट्स, सो msg डॉट गेट बाइट्स। ओके, डन। मैसेज बना दिया हमने, मैसेज आ गए हमारे पास। अब किसको सेंड करना है, उसका एड्रेस भी तो चाहिए। ओके, आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल। inet address equal to, what I should write over here is to write inet address dot get local host, है ना, get local host. Now we have IP address also. Next step is what? Create a datagram packet. So datagram packet, already I had data for receiving. Again for sending we need to create another datagram packet. So datagram packet dp1 equal to new datagram. So whenever you send the packet, what things you need? You need what? You need the data, the length, the INET address, the port number. Okay. So data, where is my data? My data is in B1. What is the length of B1? I can calculate using length method. Then third parameter, I have to pass INET address. Fourth parameter, I have to pass what? Port number. Okay. So नंबर आई शुड पास ओवर हियर, जहां से मुझे पैकेट आया है, जिसने मेरे साथ कनेक्ट किया है, उसका पोर्ट नंबर मैं डालूंगी। तो डीपी गेट पोर्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लाइन। मैंने डीपी डॉट गेट पोर्ट क्यों डाला, बिकॉज पैकेट आई हैव रिसीव दिस पर्टिकुलर पोर्ट, तो इसलिए मुझे उसको डेटा सेंड करना है। क्लाइंट का पोर्ट मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ क्लाइंट पोर्ट। is a server program. Server is not aware of client port. So how server will come to know client port? जो पैकेट आया है उस पोर्ट से उसको पता चलेगा कि पोर्ट क्या है। Finally, what is to be done? Use the method send for sending the data. So ds dot send and then in bracket I have to write dp1. Okay, so this is done. सर्वर साइड पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, क्लाइंट में जाके रिसीव करेंगे। सो क्विकली टेल मी स्टूडेंट, डिड यू ऑल अंडरस्टूड दिस लाइंस, या आपको कुछ डाउट? ask the doubt if you have anything, if anything is not clear. Why I am creating packet again? I hope you all have understood. एक ही पैकेट से आप सेंड और रिसीव नहीं कर सकते हो। ओके, देन therefore are creating two different packets. Okay, so now let's go to client side and let's complete the code of receiving. ठीक है, तो this was code for send. So now we'll have code for receive. Can you all help me? Receive में क्या करना पड़ेगा? Yes, I should do. रिसीव करते हैं तो क्या रिसीव क्या करना पड़ेगा, फिर से पैकेट बनाना पड़ेगा, फिर से एरे बनाना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अगेन एरे। यस, मैक्सिमम साइज का एरे बना दो। देन क्रिएट अ पैकेट। whatever step you have done over here, same you are going to do at client side also. So datagram packet dp1 is equal to new datagram packet. Now whenever you receive, you don't have to specify inet and port address. आपको सिर्फ कहां पे रिसीव कर रहे हो and the what length that. Okay, ये हो गया। So we have done with these two lines. Now what I'm going to receive. So let's write ds dot receive dp1. तो मेरा डेटा किस में आ गया, dp1 में आ गया। बट जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो स्ट्रिंग
str is equal to new string and then dp dot get data, and then do this out. And then plus str. And done with the sending and receiving part. Now let me execute. One line we have forgotten, that is a close line, which is very important. Close your socket. So close the socket at server side as well as at client side. Okay, so let me run server. Okay, server started. As soon as I start client, see my output. Yes, I hope you all can see output. This is what server. Okay, ये मैंने निकाला नहीं है इसलिए ये भी आ रहा है. I'm client is received at server side. Hey, I'm okay. Hey, I'm client. What is this? It should show me hey, I'm server. Okay, let me see where I have done mistake. Okay, student, can you see what mistake I have done? I wrote DP over here. मेरा packet DP1 है. So this is what the mistake. Simple सी mistake थी. Okay. So server started. We'll start client also. So now the message which I'm getting, packet sends. Okay, server started, received hey I'm client, and at client side packet sent and received hey I'm server. Yes, student, did you all understood this part? किसी को कुछ डाउट है कैसे क्या हुआ? Okay, so okay, let me ask one question. If I change this port number, will I get any error? If I change this port number, let me put some port number. Will I get any error? चलो सर्वर रन करते हैं और क्लाइंट को भी रन करते हैं. It is showing packet send. Oh God, it is showing packet send. Packet तो receive ही नहीं हुआ. Can you see this is called as what? Not a reliable protocol. वो कोई अगर 4x6 पे रन हो रहा होगा ना तो वो पैकेट उसको रिसीव हो जाएगा. प्रोग्राम I'll have one प्रोग्राम, मैं उस पे ये डेटा सेंड करती हूँ. तो मेरा ये सर्वर किस पे रन हो रहा है? 3456 पे, एंड this program is sending data to 666. So I'll run that server. Okay, let me go to my code. ओके मैं सीएमडी से फटाक से एक सर्वर को रन करती हूँ. सो आई हैव स्टार्टेड सीएमडी. I have one program over here, that is server UDP. I'm changing port number in this program. So ये प्रोग्राम भी रन करती हूँ और वो सर्वर भी रन करती हूँ. तो ये क्या कर सर्वर को डेटा सेंड कर देगा. सो 1 2 3 4 666 मैंने दे दिया एंड देन जावा सी. Okay, then
Now my this server is running on port. Oops, made a mistake. So my this server is running on port number 666. अभी ये क्लाइंट को मैं रन करती हूँ. ओके, सो कैन यू सी, यहाँ पे मैसेज आ गया. ये स्टूडेंट. सो ये क्या है, जो उस पोर्ट नंबर पे रन होगा उस पोर्ट को जाके वो डेटा सेंड कर देगा, है ना. अब अगर मैं इस प्रोग्राम में चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे और कुछ पोर्ट नंबर डाल देती हूँ, 5678 डालती हूँ, फिर मैं इसको I'll run my server and then I'll run this client program. Will I get output here? No, I'll not get output because client has sent packet to somewhere else. अब अगर इस पोर्ट पे कोई रन होगा तो उसको आउटपुट मिलेगा. ओके. Yes. Okay. So if you want to take screenshot, I'm opening this program in Notepad. You can screenshot. Same program, whatever I have taught you, beans, same I have taken over here. So you, if you want, take the screenshot so that you can practice. Okay. So this was a client program and now this is a server program. Okay, done. So now it's not like that you only can send your textual messages. You can send any kind of messages. For example, instead of sending, hey, I'm client, let me send some number over here. Or you can, yes, or you can take some value from user also. तो यहाँ पे आप स्कैनर से भी वैल्यू ले सकते हो. तो चलो मैं क्या करती हूँ, क्विकली इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर and then I'm taking system.in and then s out, enter any number, and then I'm trying to store that number in what, this variable. So sc dot is asking me to import. So now instead of sending message, hey, I'm client, I'm sending what, number. Okay, and that to be in string format. So at server side, what I'm going to do, I'm going to check whether the number is divisible by 2 or not. Even odd है कि नहीं वो करते हैं. So at server side, I have received the message. ये message मुझे मिल गया str में. अब इस str को मैं क्या करूंगी, I'll convert that into integer. N is equal to what I'm going to do, I'm going to write student, confirm whether my video is lagging or what. Integer dot parseInt, and in bracket I'm writing that str. So my number has been converted, my data has been converted into number format. So now I'm going to put if condition, if n person 2 is equal to 0. So probably मैं एक और वेरिएबल बना लेती हूँ मैसेज सेंड करने के लिए. Okay, so if it is equal to 0, then what I'm going to do, I'm going to put in this output as what, n is even. What I'm going to do, I'm going to append what, n is odd. Yes, is this clear to you all? क्या किया है मैंने मैसेज जो आया उसको क्या किया है, उसको मैंने कन्वर्ट किया है नंबर फॉर्मेट में, एंड देन आई एम चेकिंग वेदर इट इज इवन एंड ऑड, और फिर वो मैसेज सर्वर को सेंड हो जाएगा. सो नाउ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग str, व्हाट आई एम गोइंग, okay, this was the
Okay, so instead of sending this message, hey, I'm server, what I'm going to send? I'm going to send output. Okay, so now let's run. It is showing me unrecognized Windows packet error. Cannot bind. Already running था server मेरा. Can you see? दो program already running थे. Okay, and this is port number 345. I should have same port number 3456. Okay, what error it is showing? Cannot bind. Let me change port number. Might be I have run so many programs today, so probably हो सकता. Okay, okay. So that use somewhere मेरे पास आज बहुत बहुत सारे 2-3 दिन से बहुत सारे सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन हो गए. I have used combination of port. I'm entering number 3. So um, it has gone to server packet send. It is, and then it is showing me number format exception. Okay, server started. Okay, can you see I'm getting 3 is odd. ओके, सो सर्वर ने क्या किया? कंप्यूटेशन परफॉर्म किया और क्लाइंट को क्या भेजा? मैसेज भेजा दैट 3 इज ऑड. इफ यू रन इट अगेन, यू आर गोइंग टू गेट द एप्रोप्रिएट आउटपुट. So I'm writing 6. 6 is even. Yes, student, did you all understood? Okay, so that's the datagram packet. So I hope you all have understood how to communicate between client and server using datagram packets. So if anyone is having doubt, you can put in chat box. Otherwise, then we'll end the sessions for today. So only one topic is left, URL and URL connection. So for that, I need half an hour. So I'm thinking to what create video on that and then upload that video instead of keeping live session. Yes, it's okay. So that is a smaller topic. I'll make a video on that and I'll upload that video. Or if you all say, I may take session on that for half an hour live session. So quickly student reply for this. Do you want video on URL in URL connection? आप particular URL से data कैसे read करोगे? Or can we do with video, uploaded video? So what you want? You want live session or you want video on that?
Others also reply how you want. Okay. So ठीक है. Okay, so students, so let's end the session today. Thank you for watching my video till end. Thank you for being with me for 3 sessions. And this completes your okay. This completes your networking part. So before going, please hit the like button and do comment on my videos and share my videos with your friends so that it reaches to maximum number of people. So, okay, I'll make video and upload because it is a small topic, so better to upload the video. So, thank you once again, everyone. Keep watching my videos and keep sharing my videos. Bye bye. Have a great evening.